है विजेंद्र जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूएन हेडक्वार्टर में आज वो योग दिवस करेंगे, यानी कि योग दिवस का जो एक विस्तृत रूप हम देख रहे हैं, क्या लगता है कितना बदला है और पीएम मोदी के इस योग से किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि जो है वो और भी सशक्त होगी? देखिए, शुरू में बता दूं कि 2014 में यानी कि भारत की पहल के बाद यूएन ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के बाद से ही 21 जून यानी कि आज के दिन को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये भारत की पहल रही है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारत की तो पहल रही है, लेकिन इस पहल में ज़्यादा मोदी जो पीएम रहे हैं, पीएम मोदी का योगदान बहुत बड़ा है। तो इस लिहाज से आज के दिन को यूएन में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज चूंकि यूएन का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, उस न्यूयॉर्क के बाहर का जो यूएन का मुख्यालय है, उसका जो बड़ा लॉन है, उस लॉन में पीएम आज वहां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूएस के बड़ी बड़ी हस्तियां आज वहां पर मौजूद हैं और सब पीएम के साथ, यानी कि पीएम मोदी जब योग करेंगे उनके साथ साथ ये जो तमाम लोग हैं अमेरिकन के जो सोसाइटी के हर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं आज वहां योग करेंगे। और इसको आज सिर्फ यूएन में ही नहीं या भारत में नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया गया है। और योग के मौके पर आज सुबह से ही, मतलब जिस मुल्क में दिन या रात जहां भी हो रहे होंगे वहां की जो सुबह हुई है उस सुबह से ही योग की शुरुआत हुई है। आपने सही कहा, हमने देखा भी कि अभी भारत के अंदर की बात कर लीजिए तो आज हर राज्य में लोग अपने अपने स्तर से योग दिवस मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योग दिवस की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद से किस तरह से उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया और उसके बाद किस तरह से अब लोगों में योग के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ रहा है, लोग योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जैसा कि आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे से सामरिक तौर पर हो, व्यापारिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, कितनी मजबूती आएगी भारत और अमेरिका के रिश्ते में? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है विजेंद्र जी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन पहुंचे। देखिए, सब में अहम बात यह है कि पीएम मोदी का ये पहला स्टेट विजिट है, यानी कि स्टेट विजिट में मीन्स कहा जाए कि वहाँ के प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने खासतौर पर पीएम को निमंत्रण दिया है और इसी बेसिस पर पीएम वहाँ गए हैं। तो ये पहला जो स्टेट विजिट है और ये हाईएस्ट लेवल का बताया जा रहा है। और इस दौरान जो कल यानी कि कल 22 जून को जब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में मुलाकात होगी, जब टॉक्स होगी, उस दौरान कई करार होंगे और करार से भी हटकर बताया ये जा रहा है और माना ये जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, उनका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और ये रोड मैप 10 साल के लिए रहेगा, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की दशा और दिशा क्या होगी, उनका डायनामिक्स क्या होगा, ये सब तय किया जाएगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका किसी भी सूरत में चाह रहा है कि भारत को अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हुआ है उस जंग के बाद से रूस के तरफ यानी कि सपोर्ट में भारत ने एक सॉफ्ट स्टैंड लिया है। उससे अमेरिका और यूरोप के जो तमाम एलाइज हैं यूएस के, वो भारत से नाराज रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने स्टैंड पर अड़ा भी रहा और भारत विदेश नीति में अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक फाइन बैलेंसिंग लाया है। और इसके बाद से इस फाइन बैलेंसिंग को लेकर जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दुनिया के तमाम देश यानी कि अमेरिका और यूरोप के कई देश का उन्होंने दौरा किया और इस दौरा के दौरान उन्होंने भारत के स्टैंड को बताया भी और भारत की जो इनहेरेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके स्टैंड है, उसकी वेरियस स्ट्रेटजीज है, उन सब को बताया। उसके बाद से अब यूरोप और अमेरिका ने भी मान लिया है कि भारत का विदेश नीति के फ्रंट पर रूस के संदर्भ में, यूक्रेन के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में या यूरोप के जो तमाम जो देश हैं उन सब के संदर्भ में भारत का अपना स्टैंड है और वो स्टैंड बनाए रखना चाह रहा है भारत। तो ये एक बड़ी बात हुई है। उसके बाद से कहा जा सकता है कि वर्ल्ड के पॉलिटिक्स यानी कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल स्टेज में भारत की एक साख भी बढ़ी है और भारत के विकास में जो रफ्तार है और जो उसका जो ग्रोथ ट्रेंड है
इसे लेकर दुनिया के जो तमाम देश हैं वो भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, भारत को जानना भी चाह रहे हैं और भारत से हर कदम से कदम मिलाकर भी चलना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा देश यूएस है। तो आज चूंकि पीएम न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में योग करेंगे ही और इस योग के बाद से यानी कि न्यूयॉर्क के बाद से पीएम आज देर शाम तक वो वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जो कि यूएस का स्टेट कैपिटल है, डीसी जाएंगे। और कल 22 जून को मोदी के औपचारिक दौरे की शुरुआत कहा जाए कि वो कल से होगी। बिल्कुल आपने सही कहा विजेंद्र जी, जो दौरे की शुरुआत तो औपचारिक तरीके से कल होगी कि किसके किसके साथ वो बैठक करेंगे, क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या, जैसे कि आपने भी बताया, क्या क्या समझौते हो सकते हैं। लेकिन सबके बीच हमने एक तस्वीर अभी देखी थी, अभी जैसे कि आ भी रहा था कि किस तरह से यूएन मुख्यालय के बाहर यानी कि हेडक्वार्टर के बाहर किस तरह से जो भारतीय लोग हैं वहां पर वो कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है विजेंद्र जी कि लोग काफी उत्साहित हैं और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। किस तरह से भारत जो यानी कि जो भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका जैसे बड़े देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वहां जाकर योग कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं उनसे। देखिए कल जब यानी कि न्यूयॉर्क में करीब 10:30 बजे रात को पीएम वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद से जब पीएम एयरपोर्ट के बाहर आए हैं उसके बाद का जो मंजर और नज़ारा रहा है वो बेहद अहम रहा है। क्योंकि भारतीय मूल के जो तमाम लोग हैं और विभिन्न राज्य में विभिन्न शहर में जो थे वो सब न्यूयॉर्क चले आए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि बड़ी गर्मजोशी कल तो दिखाई दी ही है। और वही उसी टाइप की कहा जाए कि वेलकम और गर्मजोशी है जो आज भी दिखाई दे रही है यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर जब पीएम यहाँ योग शुरू करेंगे। और पीएम के साथ कई देशों के बताया जा रहा है कि 180 देश के जो राजदूत हैं वो रहेंगे और उसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी के जो तमाम बड़े बड़े शख्सियत हैं वो सब वहां पर रहेंगी और योग करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है और इसमें कोई ऐसा की बात नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा विजेंद्र जी, अभी हमने तस्वीरें भी देखी। फिलहाल ये चर्चा जारी रहेगी, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सहारा समय। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई कल सुबह योग करने चले? नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क में योग दिवस मना रहे हैं और उनके साथ जितने भी भारतीय यानी कि प्रवासी भारतीय हैं वो योग कर रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का अमेरिका दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र जी। और विजेंद्र जी, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, योग को लेकर, कि किस तरह से योग दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम का जो एक मूल मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि G20 की अगर बात कर ले तो G20 का भी इस बार जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली, इसको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो पहल की गई है, उससे आपको क्या लगता है कि अभी तक दुनिया कितनी जुड़ पाई है इस मंत्र से?
देखिए, सब में अहम बात आती है कि पीएम का यानी कि भारत का जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्किल है, उसका एक बड़ा पार्ट है योगा। और योगा को भारत ने इसलिए प्रमोट किया है कि इसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के जो तमाम मुल्क हैं और तमाम लोग हैं, वर्ल्ड में जो भी भिन्न जाति भिन्न धर्म के लोग हैं, सब इस योग से जुड़े और भारत का जो सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्किल है वो भी फैले। तो यानी कि भारत चाह रहा है कि अपनी जो हार्ड यानी कि जो रॉ जो कूटनीति है उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू जो जिसमें आर्ट, कल्चर, सिनेमा, बॉलीवुड ये जो तमाम है, और इसी का एक बड़ा पार्ट है योगा। और योग के थ्रू हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के जो तमाम देश हैं, तमाम लोग हैं, और उन सब से हम जुड़ें। और भारत की जो स्किल है यानी कि भारत की जो कल्चर है, सभ्यता है, ये बहुत ही पुरानी है। ये सब दुनिया के जो तमाम देश हैं, तमाम लोग हैं, ये जाने। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2014 में जो प्रस्ताव हुआ और यूएन ने डिक्लेयर किया, उसके बाद से भारत की इस पहल की सराहना भी हुई है। और यही नहीं, आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व यानी कि विश्व के हर जगह हर लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और योग और योग दिवस के मौके पर हर देश में कोई न कोई तरह का कार्यक्रम हुआ है जो योग से जुड़ा हुआ हो। तो ये एक बड़ी पहल भी है और बड़ी बात भी है। और ये बताऊं कि आज के मौके पर, चूंकि आज वर्ल्ड योगा डे है, उसके मौके पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल का एक अहम बयान आया है। और बयान में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड योगा यूनाइट्स मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब फॉर whom it is a source of strength, harmony and peace। ये कहा जाए कि सिर्फ योग एक कहा जाए कि स्वस्थ रहने की बात ही नहीं है, एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया के जो तमाम लोग हैं उनको जोड़ रहा है। मिलियन से मिलियन जो लोग हैं उन सबको एक जोड़ रहा है, क्योंकि आज का जो विश्व है डिवाइडेड है हर तरह से, जाति, धर्म, भाषा, हर रूप में जो डिवाइडेड है, जो डिवीजन है, उस डिवीजन को पाटने की कवायद योग कर रहा है। तो योग का इसमें एक बढ़कर यानी कि योग का सिर्फ एक क्रिया नहीं है, अब अपने खुद को फिट रखने से भी बड़ा विजेंद्र जी, जैसा कि आपने योग के जो लाभ हैं वो तो बताए ही हैं, और लोग काफी इसको अपना भी रहे हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हो, मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहना हो, उसके लिए योग जो होता है वो कह लीजिए कि एक अहम आपका शस्त्र होता है, जिसके जरिए आप मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की अगर हम बात कर ले, तो योग दिवस एक शुभ अवसर के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि वो कई सीईओ से भी मुलाकात करेंगे, जैसा कि एलन मस्क से उन्होंने मुलाकात की, और जिसके इस मुलाकात के बाद एलन मस्क ने साफ तौर पर ये कहा कि एक अच्छा संकेत है और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भारत में टेस्ला को लाया जाए। तो उस और क्या भारत अभी मजबूत है, उसके लिए भारत अभी पूरी तरह से तैयार है, या फिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कल पीएम ने यूएस की जो टॉप फर्म्स है उस टॉप फर्म्स की सीईओज के साथ मुलाकात की है। और पीएम की ये मुलाकात जो तमाम है ये बेहद अहम रही है। और ख़ास तौर पर कहा जाए जो मस्क है, एलन मस्क की और पीएम के बीच में जो टॉक्स हुई वो बेहद अहम रही है। और उसके बाद यानी कि टॉक्स के बाद जब मस्क ने जो बयानात दिए हैं वो बयानात भारत के लिए, पीएम के लिए और पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा संकेत है और संदेश भी है। क्योंकि मस्क ने कहा है कि हम मोदी के फैन हैं, क्योंकि वो पीएम ये हैं जो वो चाह रहे हैं कि भारत में ग्रोथ हो और भारत में निवेश के लिए क्योंकि विजेंद्र जी ऐसा इसलिए मैं पूछ रही हूँ, देखिए कुछ दिन पहले ही हमने देखा, कुछ महीने पहले की बात है कि जब एलन मस्क ने कहा था कि वो टेस्ला कंपनी को मतलब भारत में भी उसका निर्माण करना चाहते हैं, उन कारों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार जो है वो उतना उनको सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद एलन मस्क का ये बयान काफी एक तरह से कह लीजिए इनिशिएटिव है, क्योंकि भारत में जी अगर टेस्ला आती है तो उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। जी, ये और सिर्फ मस्क ने दो पॉइंट कहा है, दो बात कही है। एक तो कही है जो मस्क की जो फर्म है टेस्ला, वो कार के लिए भी शायद वो यहाँ पर आए, और पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि मस्क की एक बड़ी नेट कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, वो स्टारलिंक नाम है उसका। और उस स्टारलिंक के लिए भी प्लान ये है कि वो भी चाह रहे हैं कि भारत में आए ताकि भारत के गांव तक नेट जाए और नेट की स्पीड भी बढ़े। तो ये एक बड़ी बात है। और पीएम से मिलने के बाद जो मस्क के जो बयानात आए हैं और मस्क पीएम से
प्रभावित हैं ही, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत पूरे विश्व में एक बड़ा, एक कहा जाए कि सर्वोच्च में सर्वोच्च राष्ट्र है और हम चाहेंगे जी इससे जुड़ें और यहाँ पर कुछ निवेश करें। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो पीएम का जो पिच और पुश रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत वो चाह रहे हैं कि यूएस की टॉप फर्म्स हैं और उस सीईओ से मिले हैं, तो पीएम का यही पिच और पुश है कि किसी भी तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश हो, या तो डायरेक्ट हो निवेश हो, या कुछ ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी बात हो। तो हर तरह से पीएम चाह रहे हैं अपने दौरे का फायदा लिया जाए, माइलेज लिया जाए, और उस तरह से चाह रहे हैं कि भारत में निवेश आए और भारत से जो तमाम जो यूएस की फर्म्स हैं यहाँ पर जुड़े। लेकिन सबसे अहम बात है, ये कल जो 22 जून है, कल जो पीएम की औपचारिक जो दौरा है उसकी शुरुआत होगी, जब व्हाइट हाउस में पीएम को सेरेमोनियल रिसेप्शन भी दिया जाएगा, और उसके बाद जो बाइडेन और पीएम के बीच में जो टॉक्स होगी, उस टॉक्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये टॉक्स बेहद अहम है और इसमें डिफेंस के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में जो करार होंगे वो बताया जा रहा कि माइलस्टोन है, और पहली बार अमेरिका सिर्फ हमको आर्म्स नहीं देगा, यानी कि अमेरिका से पहली बार होगा ऐसा कि सिर्फ हम आर्म्स लाएंगी नहीं, बल्कि आर्म्स के जो कंपनीज हैं वो भारत में आएंगी और यहाँ पर प्रोडक्शन बेस बनाएंगी। तो ये एक बड़ी पहल है, और ये माना ये जा रहा है कि अमेरिका ने अभी तक इस तरह का जो प्रोजेक्ट और इस तरह की जो टाइज है, जो ट्रीटीज है, किसी के साथ नहीं पैक्ट किया है। भारत ही पहला मुल्क है जो अमेरिका इस तरह का पैक्ट भारत के साथ कर रहा है। जी विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया भी कि चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो, भारत और अमेरिका दोनों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और जिस तरह से पहले हमने देखा, इससे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तो किस तरह से बाइडेन ने उनकी सराहना की और साफ तौर पर ये कहा कि वो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। एक इतने बड़े विकसित देश के राष्ट्रपति का ऐसा कहना वाकई में अपने आप में बड़ी की बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ली जाए, तो पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। इन 6 दौरों में क्या लगता है, क्या कुछ बदला है, और ये दौरा उन दौरों से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, कहा जाए तो जॉर्ज बुश के बाद से, यानी कि बुश के बाद से बिल क्लिंटन आए, बराक ओबामा है, इस दौर से ही, यानी कि बुश के बाद का जो दौर रहा है वो भारत के लिए बेहद अहम रहा है। बिल क्लिंटन के दौरान भी भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बराक ओबामा के समय में और हुए हैं टाइज और स्ट्रांग हुए हैं। और ये जो बाइडेन के शुरुआती काल में, यानी कि जो बाइडेन जब सत्ता की बागडोर संभाली, उसके बाद शुरुआत दौर में तो माना ये जा रहा है कि जो बाइडेन की जो नीति है, जो कहा जाए कि जो प्लानिंग है, वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है, और खास तौर पर कहा जाए रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हुआ है, और उस जंग में भारत एक बड़े, कहा जाए कि सुपर पावर तो नहीं कहेंगे, लेकिन भारत एक बड़े पावर के तौर पर वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में आया है, वर्ल्ड के स्टेज पर आया है। तो अब अमेरिका के लिए मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है भारत को टाइज बनाना, भारत को क्लोज लाना, क्योंकि अमेरिका की एक रणनीति ये है, और खास तौर पर यूएस की तो कहेंगे ही, लेकिन उसमें जो बाइडेन खास तौर पर ये चाह रहे हैं कि पुतिन को साइडलाइन किया जाए, यानी कि पुतिन को दरकिनार करने के लिए वो चाह रहे हैं कि भारत को अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो टाइज है वो बेहद अहम है, और किसी भी सूरत में भारत नहीं चाहता है जो अपने रूस के साथ जो उसके टाइज हैं उसको उसमें फासले बढ़ाए, दूरियां बने। तो ये स्ट्रैटेजी अभी यूएस की है, जो बाइडेन की है, लेकिन भारत का जो फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की जो विदेश नीति का जो स्टैंड है, भारत ने साफ कहा है कि हमारे रूस के साथ पुराने टाइज हैं, लेकिन रूस के साथ रहेंगे। लेकिन हाल के दिनों में डिफेंस के क्षेत्र में जो कि कहा जाए कि रूस और भारत के बीच में जो एक टाइज थे वो कम हुए हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ रूस से ही आर्म्स नहीं खरीद रहा है। एक दौर था जब 67% जो हमारा आर्म्स है सब रूस का था, लेकिन अब वो डाउन हुआ, बहुत हुआ है डाउन। अब 47% जो आर्म्स है वो हमारा रूस का बना हुआ है। तो अब हमने अब अपने डिफेंस के टाइज को और दायरे को बढ़ाया है। हम फ्रांस से भी आर्म्स ले रहे हैं और यूएस से भी खरीद रहे हैं। विजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, और उसके बाद वहां पर मौजूद अन्य लोग भी आपको बता दें कि महात्मा गांधी
की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएन हेडक्वार्टर की लॉबी में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवा योग अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस योग के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इस योग की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, यानी कि योग एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। और इसी नीति के तहत, इसी मंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर की लॉबी में योग करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। अब वो आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के साथ कई जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और योग करते हुए भी नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएन में देखकर जो भारतीय प्रवासी के लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी लॉबी भरी हुई नजर आ रही है और बड़ी यानी कि कई बड़ी हस्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज योगा करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन पहुंचे हैं, यानी कि यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वहां पर वो योग करेंगे और योग के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें 180 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए किस तरह से एक उत्साह नजर आ रहा है। जो भारतीय प्रवासी के लोग हैं अमेरिका में वो भी योग के प्रति कितने, जहां जबकि अगर यूएस की बात कर ले तो काफी बिजी होता है वहां का शेड्यूल, लेकिन किस तरह से योग के प्रति लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और खासतौर से इसलिए भी आज ये जो है तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन गए हुए हैं। देखिए जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि यूएस में बताया यह जा रहा है कि अभी वहाँ के सुबह के करीब 8:15 या 8:20 हुए हैं। तो वहाँ पर अभी सुबह से ही योग का तो माहौल है ही और पीएम तो वहाँ अभी विराजमान है और पीएम के लीड करेंगे। बताया यह जा रहा है कि यूएन के बाहर जो योग हो रहा है उसको पूरा उसमें। अब विजेंद्र जी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जो अभी ये किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद जब योगा करेंगे तो क्या इस दौरान बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद रहेंगे? क्योंकि तस्वीरों में हमने उन्हें नहीं देखा। देखिए बताइए ये जा रहा है कि शायद न्यूयॉर्क में जो योग डे है इस समय हो रहा है उसमें जो बाइडेन और उनकी वाइफ नहीं रहेंगी, क्योंकि इस समय वो न्यूयॉर्क में नहीं है। लेकिन कल जब पीएम डीसी जाएंगे, यानी कि वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, तो वहाँ पर जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के साथ पीएम की जो टॉक्स होगी, मुलाकात होगी, ये बेहद अहम रहेगी। लेकिन इस समय न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर जो पीएम हैं और उसके अलावा बताया जा रहा है कि 180 प्रतिनिधि हैं देश के हैं और प्लस जो टॉप यानी कि यूएन में जितने भी टॉप डिप्लोमेट्स हैं विभिन्न देश के, वो सब आए हुए हैं और यूएस की सोसाइटी के भी बड़े बड़े जो शख्स हैं वो लोग भी आज योग कर रहे हैं पीएम के साथ। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग हैं और इन सारे जब योग जो किया जाएगा तो इस योग प्रोग्राम को जो लीड करेंगे वो पीएम करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात है। और यही नहीं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो सॉफ्ट बिल्कुल आपने सही कहा विजेंद्र जी, एक जो रणनीति है यानी कि भारत की जो विदेश नीति है इस योग के जरिए वो भी एक तरह से देखने को मिल रही है कि किस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो प्रगाढ़ हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, रणनीतिक तौर पर हो। जैसा कि आपने अभी ये भी कहा कि डिफेंस के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत की योजना पर काम कर रहा है और साथ ही साथ अब जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं उसमें कई बदलाव भी हमने देखे। जैसा कि आपने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि अगर अभी हाल ही में जो युद्ध हो रहे हैं उसकी बात कर ली जाए तो उसमें भी भारत तटस्थ नजर आया। अमेरिका ने कई बार दबाव बनाया कि वो जो है रूस से हथियार ना खरीदे, ईरान से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि भारत की विदेश नीति है, इसमें किसी भी देश को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। एक ये तटस्थता जो है वो भी दर्शाता है कि भारत जो है वो वैश्विक मंच पर अब मजबूत है। देखिए जाहिर तौर पर ये जो शॉट्स आ रहे हैं इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीएम अभी स्टेज पे हैं और अब से थोड़ी देर बाद योग की शुरुआत की जाएगी, वहां से अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद पीएम का योग शुरू
करेंगे। और इसमें जो मंच पर जो बताया जा रहा है कि यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं जो यूएन में हैं वो तमाम लोग वहाँ तो मौजूद हैं ही, और साथ ही साथ जो बैनर लगा हुआ है यानी कि बैकग्राउंड में जो बैनर है वसुधैव कुटुंबकम का, ये नारा बड़ा अहम है क्योंकि ये नारा भारत का एक पुराना है और भारत चाह रहा है कि, और भारत मान रहा है कि पूरा विश्व एक समुदाय है। ये एक बड़ी बात है जो कि योग के थ्रू इसको प्रमोट किए जाने की कवायद हो रही है। और भारत का जो स्टैंड यही रहा है कि भारत के जो पुराण में, जो शास्त्र में, जो सभ्यता में, संस्कृति में जो बातें कही गई है वो बात यही है कि किस तरह से पूरा विश्व एक समुदाय है और सबसे एक जुड़ाव है, लगाव है। तो ये एक बड़ी बात होगी। अब से थोड़ी देर बाद पीएम शुरू करेंगे, योग को लीड करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा की बात है कि भारत और यूएस के बीच में एक कहा जाए तो भारत यूएस ही नहीं बल्कि भारत और विश्व के जो तमाम मुल्क हैं उनके बीच में योग एक बड़ी कड़ी है जो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रमोट भी कर रही है। और इससे जो तमाम विश्व के जो तमाम देश हैं इनसे भारत को कनेक्ट भी हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात हुई है और इसकी शुरुआत कहा जाए कि 2014 से हुई है जब यूएन ने एक प्रस्ताव पास कर आज के दिन को यानी कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे अनाउंस किया था। तो ये एक बड़ी अहम बात तो है ही। और अब से थोड़ी देर बाद लेकिन इन सब के बीच विजेंद्र जी आपसे भी समझना चाहूंगी क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि अब योगा करेंगे उनके साथ जो है कई बड़ी नामचीन हस्तियां भी जुड़ेंगी और वो भी योगा करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश तो की ही जाएगी। लेकिन क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे? और अगर वो संबोधन करेंगे तो इस पर भी नजरें टिकी होंगी कि अपने संबोधन में वो किन चीजों को महत्व देंगे और किन चीजों को शामिल करेंगे? देखिए बताया ये जा रहा है कि शेड्यूल में कोई पीएम का वहाँ प्लान नहीं है, लेकिन कि कहीं को कुछ हुआ तो पीएम की तरफ से जो बात कही जाएगी इस मंच पे यही होगा कि योग क्या है, योग को किस तरह से वर्ल्ड में योग जो भारत का एक स्किल है वो किस तरह से वर्ल्ड को जोड़ रहा है और वर्ल्ड के जो तमाम देश हैं और वर्ल्ड के जो तमाम लोग हैं उनको किस तरह से कनेक्ट कर रहा है और कैसे ये एक दूसरे में सद्भावना का संचार भी कर रहा है। और आज के डिवाइडेड वर्ल्ड में किस तरह से योग यूनिटी का एक बड़ा प्रतीक भी है। तो ये एक और विजेंद्र जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि 180 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, जैसे कि रुचिरा कंबोज। Honorable Minister Shri Narendra Modi, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Cambodge, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us.
The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and act. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might be very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat and practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow, but disconnected as we move through our communities.
use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for what he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a manner of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects the planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and friends. It is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Bhatt, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here.
I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together. Yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness,
in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please lead the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session. A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Namaste.
Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Breathe in. संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, straighten. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. Smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Inhale back to the center.
And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet parallel in samastiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you. Hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward. Palm. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samastiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out. Slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samastiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can, and let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up. And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in and breathe out. Keep the legs straight. Breathe in. As you breathe out, head towards the knees. Breathe in. Breathe out. Go a little further. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward. Stretch the arms forward. Let the back come up with the arms. Breathe in slowly. Come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent.
And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together. Toes pointing up to the sky. Hands beside the hips. Spine tall. Tadasana. Inhale. Lengthen your spine. Good. Exhale. Press the hips into the ground. And now we'll do Bhadrasana, the firm. So be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax. If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes pointing up. Hands beside the hips. Press down into the ground a little. Lengthen the spine. Breathe in. Exhale. We'll come into Vajrasana, the diamond pose. Be careful of this pose in case of ankle or knee injuries. Let's inhale, bring the right heel towards the right buttocks. Exhale. Inhale, left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths with the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in and breathe out. And when you feel ready, open the eyes. Good. We'll take a bend. A half camel posture, Ardha Ustrasana. Let's inhale, come up onto our knees. Ooh, that's a relief, isn't it? Okay, and let's bring our hands onto our lower back. Be careful in this pose in case of vertigo or any spinal injuries. So let's inhale here. Bring the elbows towards each other behind the back. Let the head fall back. And exhale, bend backwards from the upper back, arching backwards, chest to the sky. Breathe in, breathe out. Let the head fall back easily. Breathe in, breathe out, breathe in, and breathe out. One more time. Breathe in and out. Inhale, come back up slowly with awareness on the body. Good. Exhale, gently relax. Good. Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful in case of osteoarthritis of the knees. You can come out of this posture. Yeah? Inhale, open the knees. Exhale, let's put the hand between the legs. Inhale, lengthen your spine. And exhale, slide forward gently and slowly, all the way, keeping the arms in parallel with each other. Bring the chin to the ground if you can, and relax the whole body. If the chin doesn't want to touch the ground, bring the forehead to the ground and relax. Breathe into your hips. Breathe in. Breathe out. Deep breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.
One more gentle breath in and out. Good. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Breathe in. Exhale, close the knees. Good. And we'll take the stretched up frog posture, Uttana Madhukasan. So inhale, let's take the knees to the side. Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. Yeah. Inhale, take the arms up from the front, stretch the spine, smile, and exhale, bend from the elbows only, the palms onto alternate shoulder blades. Right palm on the left shoulder blade, left palm on the right shoulder blade. See if you can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. Breathe out. You can smile. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale. Raise the arms up. Good. Exhale. Relax. And you can close the knees. And the moment you've been waiting for, let's sit down onto our mat on our stomach. Come all the way down. Make a pillow with the hands. Turn your head to the right side. Take your feet 2 feet apart or so. Let them splay out to the side. Turn your head. Put it onto hands. Makarasan, crocodile pose. You're like a crocodile resting in the sun. Let the breath relax. Good. Now bring the legs together. Take the arms out in front of you. You can have them resting on the ground. We'll do Bhujangasana, cobra pose. Be careful of this pose in case of hernia or any abdominal injuries. Inhale, bring the hands underneath the shoulders, elbows close to the body. Exhale here. And inhale, lift the head, chin, chest, upper chest until the navel. And breathe here. Deep breath in. Breathe out. Relax the shoulders. Push them down and back. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One more breath in. Come a little higher. And exhale. Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasan on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasan, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs. Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more breath. Breathe in. And exhale. Release the head down. Relax the legs. Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides. And the arms by your sides. Palms facing up to the sky. Relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body.
Become aware of the natural flow of the breath. Let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs and hips, our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand. Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. Eyes. The top of the head. The whole body. The whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing technique, pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. So index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose. And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. Let the eyes closed. Relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand
into Jnana Mudra. Index finger and thumb lightly touching the three fingers. Rest left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left. Good. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring, again, the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb lightly touching. In Brahmari pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound, like this. We'll do this with a special mudra called Shanmukhi Mudra. We'll be closing off all of the senses. Yeah? So bring the hands towards the face. Shanmukhi Mudra, we close the eyes, gently touch the index fingers onto the eyelids, and then the middle fingers onto both sides of the nose without closing the nostrils. The ring finger above the lips, right below the nose, and place the pinky finger right beneath the lips. And we'll be, in a moment, closing the ear flaps with the thumbs. And we're going to be taking deep breaths in and breathing out with the humming sound 3 times. So let's go ahead and close the ear flaps with the thumbs. Take a deep breath in. And breathe out with a humming sound. Deep breath in. Again, sound. One more time. Deep breath in. Breathe out. With the eyes closed, relax the hands in the lap. We'll be practicing dhyan or meditation. You can keep your eyes closed and bring the hands into dhyan mudra, which is into the center of the lap. Bring the right hand into the center of the lap, palms facing up, and the left hand into the center of the lap, and bring the right hand on top of it. Both palms facing up. The palms are stacked. And with the eyes closed, let's take a deep breath in. And breathe out.
Relax the shoulders. Take a long, deep breath in. As you breathe out, feel the weight of the body dropped onto the ground where you're sitting. Become aware of the whole body and become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them and let the sounds be there as they are. You are in harmony with the environment as it is. Take a deep breath in and breathe out. Become aware of any thoughts that are floating through the mind. Do not resist any thoughts. Let them come. Now you are in harmony with the thoughts, with the mind. And aware of any feelings, pleasant or unpleasant. Accept the feelings as they are. You are peace. You are joy. Breathe in and let go. Again, become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of your whole body. And let's immerse ourselves in the sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शांति शांति Take a deep breath in and breathe out. A long breath in and breathe out. Become aware of your whole body and where you're seated on the earth. Breathe in and breathe out, and slowly and gently, when you feel ready,
you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Oh, Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously. We're here in this beautiful north lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session. We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish for years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for cooperation and your understanding. तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और उससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों को शामिल किया। साफ तौर पर योग के महत्व को भी बताया कि किस तरह से योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ योग को ये भी कहा कि योग जोड़ने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया और साथ ही साथ वन नेशन यानी कि वन अर्थ वन फैमिली का भी मंत्र दिया और कहा कि जिस तरह से भारत ने इनिशिएटिव लिया, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि योग भारत से आया है, यानी कि योग को दुनिया भर में फैलाने के लिए भारत अग्रणी बना है। इतना ही नहीं, उन्होंने मिलेट्स का भी जिक्र किया, किस तरह से 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में उन्होंने अभी हाल ही में संबोधित किया था, घोषणा की थी उसको भी अपने भाषण यानी कि अपने संबोधन में सम्मिलित करते हुए किस तरह से उसके महत्व पर नजर डाला और किस तरह से उसके महत्व को बताया, ये भी काफी देखने वाली बात रही। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरह से योग जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना जरूरी है, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, खास तौर से अगर बात कर ले क्लाइमेट चेंज की तो उसके लिए भी योग काफी ज्यादा जरूरी है और लोग अब योग को लेकर सचेत हो रहे हैं, योग के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। और अपने संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया तो उसके बाद आपने देखा भी और अब लोग यानी कि लोगों की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वो अपने आप में ही काफी दिख रही है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन जरूरत नहीं, आप कहीं मजा ही देखते रहिए सहारा समय। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा जहाँ तो जा रहा है वहां तो ठंडी बहुत है।
क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चलें? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। पंजाबियों, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों? अब कोई चमत्कार हो गया क्या? या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चलें? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें।
ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के लॉबी में योगा दिवस मनाया और इस दौरान काफी लोग उत्साहित दिखे और योगा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर उन्होंने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उसके बाद वो जब मंच पर बैठे तो उसके बाद उन्होंने संबोधन किया और अपने संबोधन में काफी चीजों को शामिल किया, चाहे मिल्ट्स को लेकर हो, योगा को लेकर हो। खासतौर से योगा के बारे में बताया कि किस तरह से योगा जीवंत है, गतिशील है और जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योगा के तहत एक संदेश भी दिया, चाहे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हो या फिर वन अर्थ वन फैमिली का जो मंत्र है वो दिया है। साथ ही साफ तौर पर काफी चीजें महत्वपूर्ण कही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी